So a very good morning folks, and good afternoon folks, as well as good evening whoever watching from any different time zone. So let me have the session to you all editorial analysis, and I hope you will definitely enjoy the session. And I hope my voice is totally audible, and I have also been having my brush to make you underline and highlight the certain points, certain topics which are prior important with reference to the indicators, with reference to the approach which has been done. So it is very prior important and as well as crucial when we discuss about environmental issues. So when we discuss about environmental issues, then definitely everyone comes into known that the emission of CO2, as well as what are the different indicators which usually been in being a factor of discussion. So that's the reason why here I will be discussing about environmental performance index, that is EPI, what it is and how it is, and what are the different information which has been illustrated in the EPI. So then after, what actually the EPI meant by. So okay, so let me underline certain topics or certain points. First is we'll be discussing about what is EPI. So then after, strategies, okay, strategies maintained in the EPI, approaches EPI. Then after, global reference, okay, global index, we can say that global rank with EPI with reference to India and other countries. And also we'll be discussing about what is the we can say that on demand forest resources available, resources of forest availability. So then after, green goal, okay, green goal. And also we'll be discussing the points which also been written here, that is all about what it signifies: government response, claim of low PAI or pair score, then after biome protection, air quality, and finally green goal. Okay, so every point we'll be discussing in detail. So if you are new to this channel, please subscribe the channel, like the channel, share the channel. As I am new to this analysis, I hope I should have to request you all, if you really like the channel, please do that. So इस वीडियो में हम खास करके बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट, या फिर जो कि हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट को कैसे रेफरेंस करके डिफरेंट पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसको स्ट्रैटेजी बनाकर डिफरेंट पॉइंटिफाई अप्रोच कैसे ला सकते हैं, केस स्टडीज़ कैसे दे सकते हैं। उसके बाद EPI यूजुअली क्या होता है, और उसके उसके अंतर्गत क्या क्या यूजुअली आता है। उसके बाद ग्लोबल इंडेक्स, इंडिया, भारत जो कि बोलते हैं, उसका रेफरेंस या फिर उनका स्टेज क्या है, उन सभी के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह वर्णित किया गया है। ठीक है, उसी के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो लेट मी बिगिन द सेशन टू यू ऑल इन द bilingual language, both in English as well as Hindi too. So first is about the evident. Okay, so let me underline the things. So here it has been written: evidently in countries where let me highlight. Okay, so here you can see I am been underlining that evidently if countries where significant and plenty of stocks of CO2 in the atmosphere, rather than measuring the mitigation equation over the decade, India would fare much better. Less controversial, the EPI develops the performance of air quality, waste management, and ecological conservation management measures. Okay, so this point is very crucial. Okay, then after we'll be discussing about the things which are also been written about government's response. Okay, what actually the government response is, and how actually it has been illustrating, how actually it has been watching the things. So what actually the government response is: the national rank. Okay, so let me here also I can magnify that and zoom it. So the national rank of 165 on climate policy and score of 21.7 in the category, which overall has 38% weightage in calculation, along with 42% of ecosystem for fertility and 20% for environmental health, has particularly significant. India is under pressure to raise its ambition and commit, or we can say that commitment towards more ambitious of 1.5 degree or centigrade goal for temperature rise under Paris Agreement.
तो इस वीडियो में खास करके पेरिस एग्रीमेंट में जो कि लागू किया गया, पेरिस एग्रीमेंट में जो कि वर्णित है, दिया गया है, उसी के बारे में यूजुअली चर्चित किया गया है कि डिफरेंट परसेंटेज कितना हो सकता है, डिफरेंट परसेंटेज और गोल कैसे हम रीच कर सकते हैं, एक टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में बहुत अच्छी तरह इसमें दिया है। तो आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ प्लेस्ड अमॉन्ग 180, okay, 180, okay, among other countries, other nations, okay. So then after I am also been means AB point दर्शाया गया है, it also been noted that EPI report estimate that China, India, the United States, Russia are expected to account for over 50% of global residual greenhouse gas emission by 2050, okay. By 2050, what actually the goal is been estimated from this underdeveloped country and developed country. So projection मान एक रेशियो मानकर चल सकते हैं कि इतना ईयर तक कितना रीच हो सकता है। उसके बाद EGHS और GHG, usually national capital India has the low capital GHG emission, okay, greenhouse gas, we can say that greenhouse gas emission, ठीक है। तो greenhouse gas approximation किससे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे हम लगा सकते हैं या फिर उसमें कैसे यूजुअली हम बर्नर डिस्प्ले कर सकते हैं, उसी के बारे में इसमें दिया गया है द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्लेम एंड लो पेयर स्कोर, क्लेम एंड लो पेयर स्कोर इज जस्ट लाइक हाउ एक्चुअली इंडियाज अप्रोच इज, ठीक है। इंडियाज अप्रोच इन द सेंस ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हम मान सकते हैं, फॉरेस्ट मेराइन इकोसिस्टम मान सकते हैं, कितना परसेंटेज में यूजुअली है। उसके बाद टेरिस्ट्रियल बायो प्रोटेक्शन TBM नेशनल एंड वी कैन से दैट 1.5% ग्लोबल इंडेक्स में है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना का कि खाली इसमें रेशियोज या फिर डिफरेंट इमेजिन मीन्स अप्रोक्सीमेशन लगाकर यूजुअली इसमें दर्शाया गया है कि इतना देर तक कितना हो सकता है या इतना टाइम फ्रेम में कितना हो सकता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से यू ऑल। सो एक्चुअली हियर इट इज़ बीन नोटेड अबाउट द रिपोर्ट्स विच आर आल्सो बीन देयर एंड ऑलरेडी बीन अवेलेबल with the government, okay. So what actually the Indian state of forest report usually says are, and okay, what actually the index usually signifies. So those all things are been illustrated under the claim and low paid score, okay. Yeah, so then after biofilm protection and air quality, so that's all about biofilm protection and air quality, just like EPI index, प्रोटेक्शन ऑफ एयर क्वालिटी, कितना यूजुअली इमिशन होता है, कौन कौन सा गैस यूजुअली इमिशन होता है, कितना यूजुअली गैसेस मीन्स हार्मफुल होता है, कितना नहीं होता है, वो सारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO है, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि मेजर करता है पर्टिकुलर मैटर्स यूजुअली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इधर यही दर्शाया गया है कि कौन कौन सा गैस यूजुअली हार्मफुल है, कौन कौन सा गैस यूजुअली मैटर करता है विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विद रेफरेंस टू डेवलपिंग नेशन, एज वेल एज हाउ एक्चुअली हाउ मेनी deaths are been there with different how many diseases are been coming out from this air quality index, ठीक है। तो हु का गाइडलाइन भी इधर दिया गया है, कैपेबिलिटीज और कैन से दैट रिस्पॉन्स यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑफ कमिटी बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ठीक है। सो CBR, ओके, CBDR और RC जो कि हम बोल सकते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू द न्यू वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं प्रीलिम्स या फिर मेंस जो भी देने वाले हैं, एनवायरमेंटल में ज़रूर आएगा, ठीक है। आई यूजुअली अंडरलाइन, लेट मी अंडरलाइन। सो यूजुअली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ओके, अंडर पेरिस एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो भी अंडरलाइन है, जो भी क्रूशियल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इधर दर्शाया जाता हूँ या फिर दर्शाया हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज yeah, let me underline on transport about 13% of emission privilege high fuel and
vehicular taxes would exclude driving changes and rise in green commons such as clean public transport, cycling, and pedestrian. The national policy for achieving net zero emission by 2070. तो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान 2017 तक फोकस किया गया है. Let us see what actually the government has been watching, what actually the GDP is, and what actually the different medical equipment which usually India need to so tackle with. Okay, so these are the very crucial and we can say that very crucial things which I have already discussed. I hope if there is any mistakes, ठीक है, तो फिर माफ़ कर देना. जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा यूजुअली मॉडल अप्रोच यूजुअली फॉलो करता है, वो भी इसमें दिया गया है. ठीक है, तो let me end the video here itself. I hope I will not be taking a lot of time, and let me end the video. So I hope if you are new to the channel, please do subscribe, okay, and share and like the channel. So let me end the video here itself. Thank you, thanks a lot.